Namah Shivaya. Let's chant Om 3 times. Inhale. Om. 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 Gajananam Bhutganadisevitam Kapitjambufalasaravakšitam Umasutam Shokvinashikaranam Namami Vigneshwarpadapankajam Sadananam Kumkumaraktavarnam Mahamatim Divyamayurvahanam Rudrasya Sunam Sursenatham Guham Sadaham Sharanam Prapadve Ya Kundendutusharaharadhavala Ya Shubhravastravita Ya Veena Vardhandamanditkara Ya Shweta Padmasana Ya Brahmachyuta Shankara Prabhitivi Devai Sada Pujita Samam Patu Saraswati Bhagavati Nisheshajanyapah Om Namah Shivaya Guruve Satchidanandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Sri Sivanandaya Te Namaha Sri Vishnu Devanandaya Te Namaha Om Sarvamangal Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti 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 That's it. Om Namah Shivaya. Settle down again. Make the back straight. Open your chest. Relax your legs. Drop the shoulders. And exhale completely. Inhale, stretch up the spine. Exhale. Inhale fully. Exhale. One more time, deeply inhale. Exhale completely. First round of Kapalbhati. Inhale and begin. Hunt, 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 hunt. Exhale. Inhale. Exhale. Once again, deeply inhale. Exhale completely. First retention. Inhale deeply. Hold the breath for next 30 seconds. Bring your attention or focus in the center of forehead, third eye or Agya Chakra.
Very nice. 50 seconds passed. Exhale. Release the air. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time, deeply. Inhale. Exhale completely. If you need to stretch out the legs, you can do so. Otherwise, maintain your position. Let's do Anulom Vilom Pranayam. Left hand in Chin Mudra and right hand in Vishnu Mudra. Make the back straight again. Check your posture. The upper body weight on the hip bones, seating bones. Shoulders will be relaxed. Adjust the position of your head. And one deep breath through both the nostrils, deeply. Inhale. Exhale completely. Now block the right one. Through left, inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold your breath. Right, exhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Left exhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Deeply inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close the nostrils. Right exhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Fully inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold. Left exhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Deeply inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold. Keep yourself aware of the posture. Right exhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. This is the last retention. Now gently drop your right hand on the right knee. For next few moments, just stay still and observe the stillness in your body, in your mind. Feel kare the meaning of stillness. Gently open your eyes, stretch out the legs, shake your legs. You can rotate the ankles if you need to. Hands behind the back, give an arch to the back. Yes. And now release, stand on the top of your mat. Come up. Take your position for Surya Namaskar.
Give 2 rotations to the neck joint, clockwise, 2 rotations, anti-clockwise. After neck, shoulder rotations 2 times, hands on the shoulders. वेरी नाइस। इसी तरह से हिप जॉइंट मूवमेंट करेंगे, हैंड्स ऑन द वेस्ट लाइन, 2 रोटेशंस। जॉइन द लेग्स, हैंड्स, कप योर हैंड्स ऑन द नीज और नी को रोटेट कीजिए, सेम नंबर ऑफ काउंट्स, 2 and 2। चलिए, नाउ गेट रेडी। सूर्य नमस्कार पोजीशन। Feet together, join the ankles, stand straight, lock your knee joint, open the chest, inhale, exhale, hands into prayer position. Inhale, stretch your arms up and then give a gentle push to the hips, arch the back. Slowly and gently start moving down as you exhale into standing forward bend. Keep the posture soft. Now stretch your right leg back, right knee on the mat. Look back, look forward or up. Now other leg back, move to push-up posture. Gently drop the knees down, chest down and forehead down. Now inhale, slide forward, head up, chest up in cobra. Toes in and hips up, go to inverted V. Inhale, bring your right leg forward between the hands, drop the left knee. Exhale, join the feet. Inhale, stretch forward and come up, arch the back and relax. Left side. Inhale, exhale, hands into prayer. Inhale, 2, stretch up and arch. Exhale, 3, bend forward and down. Inhale, 4, left leg back. Retain, 5, other leg back. Exhale, 6, knees, chest, forehead down. Inhale, 7, head up, chest up. Exhale, 8, inverted V. Inhale, 9, left leg forward. Exhale, 10, other leg forward. Inhale, 11, stretch up, arch the back, relax. Very nice. Second round, legs together. Inhale, exhale, 1. Inhale, 2. Exhale, 3. Inhale, right. Retain, 5. Exhale, 6. Inhale, 7. Exhale, 8. Inhale, right. Exhale, left. Inhale, up. Relax. Left side, inhale, exhale, 1. Inhale, 2. Exhale, 3. Inhale, left. Retain, right. Exhale, 6. Inhale, 7. Exhale, 8. Inhale, left. Exhale, 10. Inhale, 11. Exhale. Inhale. Exhale, 1. Inhale, 2. Exhale, 3. Right leg back. Left leg back. Knees, chest, forehead down. Head up, chest up. Inverted V. Right forward. Left forward.
Stretch up and arch the back. Relax. Inhale. Exhale. 1. Inhale. 2. Exhale. 3. Inhale. Left. Retain. 5. Exhale. 6. Inhale. 7. Exhale. 8. Inhale. Left. Exhale. 10. Inhale. 11. Exhale. Inhale. Exhale. 1. Inhale. 2. Exhale. 3. Inhale. Right. Retain. 5. Exhale. 6. Inhale. 7. Exhale. 8. Inhale. Right. Exhale. 10. Inhale. 11. Exhale. Inhale. Exhale. Hands into prayer. Inhale. 2. Stretch up. Arch the back. Exhale. 3. Forward and down. Inhale. 4. Left leg back. Retain. 5. Other leg back. Exhale. 6. Knees, chest, forehead down. Inhale. 7. Head up, chest up. Exhale. 8. Inverted V. Inhale. 9. Left forward. Exhale. 10. Other foot forward. Inhale. 11. Stretch up and arch the back. Exhale. Inhale. Exhale. Hands into prayer. Inhale. Up and arch. Exhale. Bend down. Inhale. Right leg back. Retain. Left leg back. Exhale. Drop your knees, chest, and forehead. Inhale. Slide into cobra. Exhale. Mountain. Inhale. Right forward. Exhale. 10. Other leg forward. Inhale. 11. Stretch up and arch. Relax. Inhale. Exhale. 1, 2, 3. Left. 5, 6, 7, 8. Left forward. Right. Stretch up. Relax. Wonderful. Now legs apart. Close your eyes. Listen to your heartbeat. Feel grateful that you are blessed with a healthy heart. All the blood circulation in the body is perfect. Open your eyes. Now stretch your arms forward. Legs together. Stand up on your toes. Check the balance. And now start bending the knees on the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop your hips down. Lie down in Shavasana. Relax. Gently roll your head right and left. धीरे धीरे करें and observe करते हुए. Whatever exercise, asana or movement you are doing, if you put the awareness, so benefit उसका बढ़ जाता है. Because energy flows. जहाँ attention जाएगी, वहाँ energy जाएगी आपकी. Legs together, feet together. Inhale deeply, stretch your arms over the head, stretch yourself fully and release. Leg raises position.
Arms beside the body, chin close to chest. Now, right leg first. Inhale, lift your right leg up. Exhale down. Once again, right leg up. Exhale down. Watch the movement of the leg now. Inhale, right leg up. Exhale. Inhale, right leg up. Exhale. One more time. Inhale, right leg up. Stay without giving any support. So just push the lower back curve into the mat and breathe through it. Support your leg, interlock the fingers behind the thigh. Inhale, exhale, head up, chest up. Close your eyes. Now with the left foot, lift it few inches above the mat. Left foot in the air, only 2-3 inches above the floor. Breathe. First, relax your left leg and then drop the head down, chest down. Bend your knee, hug it close to the chest. Exhale, head up, chest up, Ardha Pavan Mukta Asana. Relax your head, leg up and bring it down. Nice. Shake your right leg and then left leg up. Hold it and stay without giving support. Hold the posture. So push your stomach into the mat. Now support your leg. Support करने के बाद अपनी तरफ pull कीजिए leg को. Make both the legs straight as much as possible. Exhale करते हुए head up, chest up. Eyes closed, start breathing. Toes pointing to the head or face. Now with your right foot, lift it few inches above the mat and hold the posture. Breathe. 2 more breaths. Drop the head down, relax the right foot, bend your knee. On the left side, Ardha Pavan Mukta Asana. Relax your shoulders first. Then exhale, pull your stomach in, head up, chest up. Breathe. And now drop your head down. Left leg up. Exhale, bring it down. Shake both the legs, and if you need, you can roll the head again. Rest for a few seconds. Oh, legs and feet together. Inhale, stretch your arms. Give full body stretch once again. Stretch your feet, spine and arms. Relax. चलिए sit up. चलिए half wheel लेंगे. So hold your ankles. Feet are apart, knees are apart. Chin close to chest once again. Inhale, lift your hips. Lift it higher. Breathe. Exhale, relax. Hug your legs.
मसाज योर बैक, थोड़ा सा राइट लेफ्ट होते हुए लोअर बैक को थोड़ा मसाज दीजिए. कम बैक टू द सेंटर. एक्सेल, हेड अप, चेस्ट अप. Knees are close to your chest. Watch your breath. Exhale, head down, chest down. Lift both the legs up and come down. 2 breaths in Shavasana. जब भी आप इन्वर्जन्स करते हैं, जो स्टार्टिंग रहती है हमारे रोज के क्लास की, रोल द हेड बार बार आप करिए. इससे क्या है, जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है नेक और शोल्डर्स में, वो तभी रिलीज हो जाएगा. आफ्टर द क्लास ना लिंगर नहीं करेगा. चलिए लीजिए पोजीशन फॉर मत्स्यासन, द काउंटर पोज टू सर्वांग आसन. Arms under the body, hide your elbows, legs together. Inhale, head up, chest up. Look at the toes. And then start arching your back. Roll the head down onto the mat. Upper part of the body is in active state. Feel it. And your legs are in a relaxed state, but they are not apart. Passively relaxed. Moving out of the pose, inhale, head up, chest up. Look at the toes again, and then release the posture. Shake your arms. Do the wrist rotation. And roll your head. Now relax completely in Shavasana. Oh. Legs together, feet together. Inhale, stretch. Stretch the spine. Touch the lower back to the mat and chin to your chest. And relax. Now sit up. Now Paschimottanasana. So legs together, feet together. Adjust the length of your legs. Simple seated forward bend. Inhale, both arms up. Stay there. Interlock करिए. Palms ceiling की तरफ. Upper arms behind the ears. Stretch the trunk from your right side, left side. And now inhale. Exhale. Start going forward towards your toes. Pull your toes in. Make the legs straight. And now close your eyes. आपका गेज टोस की तरफ, उसके बाद आप आंखें बंद कर सकते हैं. उससे हेड की पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी. Now do not tuck your chin to your chest. टक नहीं करना है, ठीक है. लूज रखो हेड को. यहाँ पे शोल्डर्स और हेड एंगेज नहीं करने. Deep and full breaths.
Go more deeper into the pose. जब भी आप इनहेल करेंगे स्पाइन की लेंथ को बढ़ाइए, एंड ऑन द एक्सलेशन ट्राई टू ब्रिंग द चेस्ट क्लोजर टू द लेग्स. Very nice. Now get ready to move out of the pose. So stretch your arms first forward and then come up. Swing the arms back behind the hips. Toes mat की तरफ for the counter stretching. पहले regular reverse plank. So get ready. Drop your head back. Inhale, lift the hips. Hold the pose. Regular reverse plank में हैं आप. Hold कीजिए. Breathe. Inhalation बहुत अच्छे से होगा. Higher. Exhale, relax. Maintain कीजिए आपकी position. Hands are still behind the back. Once again get ready. अच्छा, एक और बात है, बहुत ज्यादा वाइड हैंड्स को मत करो, तो मुश्किल हो जाएगी लिफ्ट करने में. थोड़ा सा क्लोज लाओ हैंड्स को हिप्स के पीछे, एंड फिंगर्स ईदर टुवर्ड्स द हिप्स या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द हिप्स. बाहर की तरफ फिंगर्स को या हैंड्स को नहीं निकालना. थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीछे देख के आप कर सकते हैं. नाउ गेट रेडी वंस अगेन. इनहेल, लिफ्ट द हिप्स, ड्रॉप द हेड बैक. हायर दिस टाइम. धीरे धीरे उठेंगे तो ज्यादा हाइट मिलेगी. Maintain the balance. Now relax the hips and release. अब shake your arms, rotate your wrists. और अब मकर आसन में आइए for backward bending poses. Relax. Roll your head to right side. Rest for few breaths. Bring your forehead in the center. Bhujangasana. Legs together. Hands under the shoulders. फिंगर्स जो आती हैं शोल्डर ब्लेड्स के नीचे आती हैं, इस तरह से पोजीशन लीजिए. नाउ गेट रेडी. इनहेल. पूनम जी फर्स्ट पोज भुजंगासन. रेडी. इनहेल, हेड, नोज, चिन, चेस्ट अप यूजिंग योर बैक मसल्स. जब भी क्लासिक पोस्चर करेंगे बैक को यूज करते हुए आपने लिफ्ट करना है. यहाँ हैंड्स का यूज नहीं होता, हैंड्स की पावर यूज नहीं होती है. होल्ड द पोज मीन्स ये नहीं कि आप एक ही पॉइंट पर रुक जाएंगे. कोशिश करें फिर से बैक को यूज करते हुए लिफ्ट करें चेस्ट को. वेरी नाइस. लिटिल बिट हायर. योर हैंड्स आर ओनली फॉर द सपोर्ट. बैक की स्ट्रेंथ को यूज करें. चिन अप. एक्सेल, रिलैक्स. रोल द हेड टू अदर साइड. Back to the center. Now classic Shalabhasan. So slide your arms under the body. एल्बोज हाइड करेंगे उतना बेटर रहेगा, जैसे आप मत्स्यासन में करते हो, बस पोजीशन चेंज है बॉडी का. चिन फॉरवर्ड. लेग्स टुगेदर. हैंड्स इधर इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर आप हाइज के नीचे रख सकते हैं. नाउ पहले अर्ध शलभासन. इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग अप. एक्सेल डाउन. लेफ्ट लेग अप.
Exhale down. Once again, lift your right leg up. बिना सपोर्ट किए. Stay there. सपोर्ट नहीं लेना. बैक को यूज कीजिए. कीप लिफ्टिंग योर लेग. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पुश देते रहो राइट लेग को. स्टे. और थोड़ा ऊपर. स्ट्रेच अप. एक्सेल. रिलैक्स. सेम गोज विद लेफ्ट साइड. इनहेल. लेफ्ट लेग अप and stay without support. Watch your breath. कितना fast हो जाता है. Higher. Yes. Exhale, relax. Now adjust yourself. चल अब आसन आपके स्पाइन के लिए बहुत बहुत अच्छा पोस्चर है. चलिए फाइनल लेंगे. धनुरासन. Bend the knees and hold your ankles. Keep the forehead in the center. Take one deep breath. And now get ready. Inhale, head up, chest up, knees up, thighs up, and look up. Breathe. Stay. Try to pull the feet towards your head. Exhale, relax. Roll your head to other side. In the center. Now let's go for cat. So legs apart, hands under the shoulders. Inhale, head up, chest up. And then lift your hips. Knees वहीं रखिए, पीछे हाथों को लेके जाइए. कैट की पोजीशन लीजिए. Do not round the back. न्यूट्रल पोजीशन में रखो. Now bird dog pose लेंगे. पहले आर्च करो. Arch the back. Okay. Stretch your right leg back and lift it up. Now सामने focal point लीजिए. Then lift your left arm in the front. And hold this pose. Keep looking at your point. Lift the leg higher. Stay. बहुत बढ़िया. Arm more up, leg more up. Yes. Exhale, drop. Child pose में जाइए. Rest for few seconds. Once again, come back to the cat position. Other side now. Arch your back. Arching के बाद leg lift करो and then lift your right arm. Look out for the balance and stay. Hold the posture. फोकल पॉइंट को डीप जाते जाइए. उस पॉइंट में पूरी नजर आपकी वहीं पर. इससे बॉडी शेक करना बंद हो जाएगी. लेग मोर अप. आर्म. Exhale, relax. Child pose once again. Breathe. Inhale, head up, chest up. चलिए सिंपल क्रॉस लेग पोस्चर लेंगे. एवरीवन सिट. चौकड़ी मार के बैठते हैं. क्रॉस लेग पोस्चर. सुखासन में बैठिए. अर्ध मसेंद्र आसन नहीं लेना है. सुखासन में बैठिए. कंप्लीट ट्विस्ट देंगे स्पाइन को. मेक द बैक स्ट्रेट and then start twisting towards right side.
Right hand on the left knee or right hand behind the back. Turn your head. चिन थोड़ा सा ऊपर रहेगा ताकि आपका बैक स्ट्रेट रहे। विजय, थोड़ा पीछे वाला हैंड आपको अपने से दूर करना होगा। हाँ, फिंगर्स को ऑपोजिट हिप्स के घुमाइए। यस। यहाँ पे टेल बोन से लेकर आपके नेक तक और फिर हेड तक पूरा ट्विस्ट आता है। ऑब्जर्व कीजिए ट्विस्टिंग। और थोड़ा डीप जाएंगे ट्विस्टिंग में। एक्सेल करो, पेट अंदर खींचो और ट्विस्ट बढ़ाओ। क्लोज योर आईज। नाउ ओपन योर आईज एंड मूव बैक टू द सेंटर। वापस भी आएंगे तो बैक स्ट्रेट ही रहेगा आपका। अब फिर से एडजस्टमेंट कीजिए एंड ट्विस्ट टुवर्ड्स अदर साइड। लेफ्ट हैंड बिहाइंड द हिप्स। आइडियली जो होता है वो आपकी जो स्पाइन होती है ना, उसकी लाइन में आपका आर्म आता है जो पीछे होता है। कि दोनों हिप्स पे वजन रखेंगे। मेक श्योर पीछे वाले हाथ पे आप बिल्कुल चढ़ नहीं गए हैं, वो सिर्फ एक सपोर्ट है। आपका वजन अभी भी हिप्स के ऊपर ही है। दोनों शोल्डर्स को चेक कीजिए, पीछे की तरफ दोनों शोल्डर्स खींचे हुए। गो डीपर इनटू द पोज और ट्विस्ट बढ़ाइए थोड़ा। यस। नेक को भी थोड़ा और टर्न करो हेड। Now slowly, gently come back to the center and release. Now final stretch लेंगे। Face the screen, feet apart. Keep your feet parallel. बाहर नहीं निकालो कोई भी फुट, पैरेलल रखिए। और डिस्टेंस डिपेंड करेगा हाइट कितनी है लेग्स की और आपकी। तो कोमल थोड़ा लेग्स का डिस्टेंस बढ़ाएंगे। Now right arm close to right leg. Lift your left arm up. हेड को टर्न कीजिए लेफ्ट की तरफ। And then slowly awareness रखते हुए start leaning onto the right side. Very nice. जब भी फीट पैरेलल होंगे ज्यादा नीचे हम नहीं आ पाते हैं, सो ट्राई भी नहीं करना। ईदर फेसिंग द स्क्रीन और फेसिंग द सीलिंग। पूनम जी, आप रिवर्स ट्रायंगल कर रहे हो, नॉर्मल रेगुलर ट्रायंगल में आओ, राइट की तरफ। फ्यू मोर सेकेंड्स। वापस भी आएंगे तो अवेयर रहते हुए इनहेल कम अप। और अवेयरनेस कहाँ की होगी, जो स्ट्रेच मिला हुआ है आपको। लेट्स चेंज द साइड। फीट वैसे ही रहेंगे, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। नाउ लीन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो राइट आर्म को लिफ्ट कीजिए, हेड को राइट की तरफ ही टर्न कीजिए एंड देन लीन बैक। कैसे कैसे स्ट्रेच बढ़ता है, कैसे कैसे वापस आते हैं स्ट्रेच से, सारा एनर्जी वहीं पे डाल दो। स्टे। नीचे वाला आर्म स्ट्रेट करेंगे। अंजलि, आप हैंड नीचे ले जा सकते हो। वेरी गुड। लास्ट 5। Inhale slowly, come up and relax. Now stand on the top of your mat. And from there, move down and lie down. Relax.
Few natural normal breaths just to settle down for the final relaxation. Tensing and stretching full body. Inhale, head up, chest up, legs up, arms up. Stretch, tense, stretch, tense, stretch, tense. Drop the body. Now touch your lower back to the floor. Push the stomach towards the mat. Push, 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 push. Touch कर दीजिए. Release. Chin को टक करो chest के साथ. Stretch the chin to your chest. Relax. Now gently roll your head towards right. राइट ईयर मैट पे लाना है. शोल्डर एडजस्टमेंट करो, चिन एडजस्टमेंट करो. एंड देन लेफ्ट. बैक टू द सेंटर. इनहेल, स्क्वीज योर फेस. एक लेमनी और टाइट फेस बनाइए, बहुत टाइट. सारी एनर्जी स्क्वीज करने में डालो. रिंकल्स, आर्टिफिशियल रिंकल्स, ताकि नेचुरल रिंकल्स दूर चले जाएं. एंड रिलैक्स. Stretch the face now. Tongue out, eyes open. Exhale, relax. Close your mouth, close your eyes. अब आप फाइनल एडजस्टमेंट दीजिए अपने पोज को. एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स कोई मूवमेंट नहीं करनी है. शवासन में हथेलियां ऊपर की तरफ रहती हैं, स्काई की तरफ. Once again, attention on the breath, or we can call awareness. So no intensity now, anywhere, physically भी नहीं और mentally भी नहीं. Keep watching the breath. Now the awareness onto your toes. Relax your toes. Soles, heels, and ankles relaxed. Relax the chins, calves, kneecaps, back of the knees, thighs, hips and buttocks. Relaxed. Relax the lower back, middle back, upper back, melting into the mat. Now awareness on the stomach, on your abdomen. Relax the entire abdomen. All the chest muscles relaxed. Relax your throat. Now the awareness on the fingertips. Feel the sensation in the fingertips. Relax the palms, elbows, shoulders sinking down into the mat. Relax the chin, mouth, cheeks, eyes, eyelids,
eyebrows, forehead, relax the top of your head, back of the head, relaxed. Relax the brain. Relax your mind. Relax. Maintain the state of relaxation in your body, in your mind. Stay completely still and relax. Oh, feel the awareness coming back to your body. Slowly, gently move the toes, move your fingers, and now start sliding your legs together. Inhale, stretch the arms over the head. Stretch yourself nicely. Exhale, relax. Turn towards right side. And gently sit up, eyes closed. Sit straight and relaxed. With a gentle smile on the face and in your heart, joy in your heart. Connect yourself to the superpower of the universe. एंड मुस्कुराते हुए ही उन्हें धन्यवाद करें ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देने के लिए कुछ सेकंड्स बनते हैं उनको थैंक यू बोलने में इस मुस्कुराहट को मेंटेन रखेंगे पूरा दिन और पूरी लाइफ लेट्स कंक्लूड द क्लास इनहेल ओ ओ ओ नमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
Om Shanti Shanti Shanti. Salutations and gratitude to the masters. Om Bolo Swami Shivanand Maharaj ki Jai. Swami Vishnu Devanand Maharaj ki Jai. Hari Om Tat Sat. Om Namah Shivaya. Thank you for joining today's session. And अपनी मुस्कुराहट हमेशा बना के रखें.